participants, and our respected guest speaker. I hope you are all well, inshallah. Firstly, I am really thankful to Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of Eastern Medicine and Surgery, Government College, University, Faisalabad. I am really thankful to Dr. Muhammad Akram, Chairperson, Department of Eastern Medicine and Surgery, Government College, University, Faisalabad, for struggle for the bright future for the Department of Eastern Medicine and Surgery and all students. We are really thankful to Dr. Muhammad Akram for organizing this webinar entitled Management of Obesity. And we are really thankful to our respected guest speaker, Dr. Abdul Malik, Assistant Professor, Pharmacology, Faculty of Pharmacy, University of Sargodha. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. We should always thankful to Allah Almighty for creating us in a Muslim family. The words of Surah Al-Rahman of Holy Quran, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Translation of this verse is, then which of favors of Lord will you deny? कुरान हमसे बार बार सवाल करता है तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? We are the followers of Prophet Muhammad, who is the last prophet of Allah. And Allah has sent down to him a book which is source of guidance, in which there is no doubt. The verse of Holy Quran of Surah Al-Anbiya verse 10 and translation of verse 10, indeed, we have sent down for you, O mankind, a book, the Quran, in which there is dhikrukum, your reminder or an honor for you. Honor for the one who follows the teaching of the Quran and acts on its teachings, will you not understand? ना हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, ना हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दिनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में. कुरान में हो गोता जन ए मर्दे मुसलमा, कुरान में हो गोता जन ए मर्दे मुसलमा, अल्लाह करे तुझको अता जद्दते करदार. Now I would like to invite for recitation of Holy Quran student of BEMS, Dr. Swabatu Zahra. Please, Dr. Swabatu Zahra, recitation of Holy Quran. Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. صدق الله العظيم. Jazakallah. May Allah help us to follow these verses. Ameen. The verse of Holy Quran of Surah Al-Ahzab about Prophet Muhammad, peace be upon him, and translation of this verse is, Muhammad is not the father of your man, but he is the messenger of Allah and the seal of the prophets, and Allah has full knowledge of all things. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहां चीज है क्या, लो हो कल तेरे हैं। करम हो निगाहे करम मेरे आका, करम हो निगाहे करम मेरे आका, गुलामों का रखना बरम मेरे आका। Now I would like to invite for beautiful words in the praise of Prophet Muhammad, peace be upon him, student of BMS, Dr. Ayman bint Khalid. Please, Ayman, Naat Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa alihi wasallam. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. वालेकुम अस्सलाम। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना, दिल में तुझे रख लूं, दिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जानाना, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, दिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जानाना, इतना तो करम करना, ए चश्माना, इतना तो करम करना, ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, दिल में तुझे रख लूं, ए जलवाए जानाना। जज़ाकल्लाह। Subhanallah, what a beautiful voice and what a beautiful words, mashallah. The title of this webinar, Management of Obesity. Firstly, I am really thankful to Dr. Muhammad Akram for organizing this webinar, and thank you so much to all organizing team. And especially thanks to our respected guest speaker, Dr. Abdul Malik, Assistant Professor Pharmacology, Faculty of Pharmacy, University of Sargodha. Thank you so much, sir, for joining us, for your precious time you have given us. And I hope your overall lecture about management of obesity will be informative for all participants. Please, sir, start and share your knowledge about management of obesity. Please, sir. जी, thank you very much for your nice introduction. I first of all congratulate Dr. Muhammad Akram for arranging such a wonderful webinar, and Dr. Isba that is also working for this organization. I also appreciate all the participants who are present here and will encourage me and will also discuss about the obesity. Now I share first of all about the some knowledge about the obesity. Let us see. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Respected sir, please share your slides. Rahim. सर आवाज क्लियर नहीं है. Presentation, I will discuss about avoid the क्लियर. Sorry sir, your voice is not clear and your presentation is not shown. जी सर बताएं दोबारा. Now we are speak loudly. आपकी आवाज सर क्लियर. Shall check now what is matter. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है. तो सर मैं दोबारा देखता हूँ इसको. अब आ रही है आवाज. सर आवाज तो आ रही है अच्छा लेकिन ओके स्लाइड नहीं ओके. है. अच्छा मैं दोबारा देखता हूँ कि क्या रीजन है. मैंने इसको ओपन तो किया है. ये स्लाइड शेयर आ रहा है. स्लाइड शेयर. अच्छा सॉरी अभी मैं दिखाता हूँ सर. एक सेकेंड. ये कोई रीजन है. ये क्या चक्कर है. अगेन आई एम शेयरिंग. अब सर बताएं आ रही है सर स्लाइड. स्लाइड शेयर हो Yes रही है sir. सर. अच्छा ओके थैंक यू वेरी मच. अब जी बिस्मिल्लाह. जी. Thank you, Dr. Saab. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am going to discuss about the management of obesity. I am Dr. Abdul Malik, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha, as already introduced by Dr. Isba. Thank you very much for your appreciating. Now coming to the main, I was explaining about the from Quran, the Holy Quran. Eat and drink, but be not excess. Indeed, he likes not those who commit excess. So in the Quran, it is also given about the it should not be taken or eaten so large that it can cause obesity or overweight. Now coming to the main list of contents, multiple contents are given here. Titles are there like introduction, pathology, complications, management, non-pharmacological, pharmacological approaches, Eastern medicine, and surgical methods, biological methods, and technological methods are given. Now we are going to the introduction to obesity. First, we should understand about the obesity, what it is derived from, what is its meaning. So obesity is a chronic metabolic disease. This is long life, chronic, basically we are taking the name, and metabolic syndrome like symptoms are there, metabolic disease, and is characterized by an increase of body fat stores. So multiple body fat stores are increased in the body. Ectopic fats is also increased, and visceral fats or other body fats are also increased. So it affects adults, children, and adolescents in the world. World is basically obesity is taken from the obesus, meaning stout, fat, or having eaten until fat. So it is giving meaning about the overweight or increased obesity. So we will see about the BMI. What is BMI? So it will show us what is the range of the obesity or overweight. Obesity causes major impact on cardiovascular diseases and metabolic disorders. More than 50% of the
than 50 diseases are derived from genetic, environmental, and behavioral factors. Environment and International Diabetes Federation, presence of abdominal obesity is the requirement for diagnosis. So this is the important point that we should understand about the abdominal obesity. So coming to the metabolic syndrome, I have also explained in the earlier about the metabolic syndrome and diabetes. So it is the main cause of multiple diseases. So obesity is also taken from the metabolic syndrome. It is caused by different factors like you can see hypertension is there, cardiovascular problem, cancer may be there, and PCOS, polycystic ovary syndrome in females, and heart diseases are also taken from the metabolic syndrome, dementia, and NAFLD, non-alcoholic fatty liver, and there is insulin resistance, lipid disorders or hyperlipidemia, and type 2 diabetes are taken from the metabolic syndrome. So now coming to the other points, that is epidemiology in the world and in Pakistan, what is its prevalence? So we go towards the its prevalence in the world. 1.9 billion people are overweight, with 650 million of those considered obese. About 80% people develops diabetes. Obesity prevalence is high in women, and overweight is more common in men. Overweight and obesity are the fifth leading risk of global deaths. In Pakistan, 22.1% are obese, and 27.9% are male, and 38.4% are female obese. So this is the basically prevalence and ratio. As in previous studies or reports, obesity was in 10 fastest countries in the world about Pakistan, but now it become very high in obesity that will become in the condition of 4 to 5 ratio. So now we go towards the basic pathophysiology of obesity, from which it is derived and from which it comes, and what is its pathophysiology or etiology. Now we go towards the obesity, what is epigenetics are there, and genetics is also there. Physiologic factors may be there, behavioral factors may be there, cultural factors are also seen, and environmental factors are also taken for obesity risk factors. So now we go towards another portion, that is pathogenesis, genes and other factors involved, which genes are major commonly found in obesity in Asian and other populations. So we go towards the factors I have already explained. Factors involved in obesity, what is etiology? Genetics involve 25%, while 75% are lifestyle, environment, and cultural differences are there that induces the obesity. And here is the gene that I indicate. Extreme obesity causes FTO genes, MSC, MC4R, PCSK1. Three major genes are there that also induces the obesity in different population of people. Now we go towards the biomarkers. We should understand what are the major biomarkers and how we will check the obesity. What are the major parameters that we should take from the blood samples or other parts, or from the BMI or from the body. So we go towards the systemic inflammation is also shown in obesity, and there is adipose tissue increase in adipose tissue, that is also important to understand. And now we go toward the adipocoins, like leptins are increased, resistines are also increased, FABP4 are also increased, and adiponectins are have been decreased, while epilene hormone is also decreased, and omentin is also decreased. These are beneficial hormones that are released from the GIT, gastrointestinal tract, or digestive system. So these are taken from the adipose tissue and also decreased. And further, these also induces the interleukin 6, and also it increases the interleukin 1 beta, and TNF alpha and interferon gamma are also inflammatory, pro-inflammatory cytokines. These are also enhanced and increased in the body. Further, we go towards the CRP, that is C-reactive protein, that is inflammatory parameter. We can check biomarker, and insulin resistance is also increased, while triglyceride and C-peptides are also increased
in insulin resistance and obesity. Further, we go towards the endothelial dysfunction, that is towards the hypertension or cardiovascular diseases is also increased, that is shown in the endothelial dysfunction. So endothelium is present in the uh, arteries or veins or small arteries like coronary arteries. Now we go towards the simple concept of developing ectopic fat and insulin resistance. This is very important slide. We can understand the major mechanisms involved in the body. So excessive calories, if a person is taking, then it increases the ectopic and other fats in the body, like subcutaneous stores are overwhelmed, increased due to genetic or other factors, ethnicity or aging. And fat spill is also taken that spread to other parts of the body, in which we can see hepatic lipid accumulation is increased, NAFLD is also increased, and muscle fats is also increased, and pancreatic beta cells is also insulin resistance is shown. And further, we go towards the perivascular fat or endothelial dysfunction is also shown through these mechanisms. So multiple mechanisms are involved for increasing the obesity in the body. So we go towards the microbiota that is also involved in nowadays. Very much reports are coming or studies are going on in the microbiota that is present in our GIT that increases the obesity in some persons. Microbiota relations with obesity and metabolic diseases. You can see from here, there is the microbiota shown in the front line, and the inflammation is also going on, and then it increases the obesity and metabolic diseases. Through insulin resistance is also increased, and fat deposition is also increased, and the microbiota also affect all these parameters, including fat deposition, including insulin resistance, including inflammation. These are also affected by microbiota that is present in normal flora of the body. So now we go towards the fructose that is also commonly taken in different beverages, in fructose drinks and other formulation that are available in America and also other countries, that is also increased through this mechanism. What fructose does in our body? So we go towards the fructose that increases the lipogenesis, dyslipidemia, which increases the ectopic fat. Now we go towards the lipid metabolites are also increased, and there is impaired insulin signaling that induces the insulin resistance and also causes insulin diabetes, type 2 diabetes. Now we go towards the increased body fat, intra-abdominal fat is also increased. And on the other hand, we can see on the right side, reactive oxygen species are also increased, and hyperuricemia, increased uric acid is also seen in fructose fed rats or other animals, and also in humans. So these also impaired the shown in the green color, impaired the endoplasmic reticulum stress is increased and impaired vasodilation. Further, that increases the risk of insulin resistance, and finally it causes diabetes. That is the main reason that is taken from the fructose. Fructose is not sensed by brain. It is only converted from the hepatocytes, and special transporters are there that increases the fructose. As in America in 1980s or 90s, there is shown some studies shown about the fructose that does not increase the hyperglycemia in the body, in the diabetes. So multiple people were said you can take the fructose diet, multiple taken, and they were seen after a few years about the cause of obesity in them. So here is the fructose and fast food consumption. For like less sugar, if we take less sugar and less sweet, that it decreases the obesity, and fast food also increases the obesity as these have high fat in them. So fast food or other fructose or sugar related products or bakery products also increases the obesity in multiple peoples and different groups and different populations. So now we go towards the medical complications of obesity. This is very important slide related to the
complications of obesity. I have also explained multiple diseases are derived from the obesity. Now we go towards the pulmonary. Like you can see, pulmonary diseases are there, like abnormal function of the obstructive sleep apnea, hypoventilation syndrome, non-alcoholic fatty liver diseases are there, steatosis, steatohepatitis, and cirrhosis is also seen, and gallbladder diseases are also seen. Gynecological abnormalities, including infertility, abnormal menses, polycystic ovary syndrome is also common. Osteoarthritis, that is joints problem, is also increased, and skin diseases are also shown. And there is increase of hyperuricemia. I have explained previous about the hyperuricemia that is shown from the fructose and from the obesity that cause gouty arthritis. On the other hand, we see from the right side, idiopathic intracranial pressure is also increased, hypertension, and the stroke is also chances for taken from the complication from the obesity, that is ischemia in the brain or hemorrhage of the brain is seen. Cataracts is an eye problem that increases the fat in the eye. Coronary heart diseases, for example, that causes from diabetes or dyslipidemia or hypertension also causes coronary heart diseases. These are the major causative agents taken from root cause of obesity. Severe pancreatitis is also seen in different people due to obesity, and cancer of the breast, cancer of the uterus, cervix, and colon, and esophagus, pancreas, kidney, prostate gland in the male is also seen from the obesity. Now we go toward the phlebitis, that is venous stasis is also enhanced through obesity. So multiple complications of obesity are also there. We should stop in any condition from the start of the year in the early age, that if goes towards the complication, then multiple diseases can happen. And life expectancy is decreased due to diabetes, hypertension, and some other problems. Now we go towards the other parts, that is management or treatment options of obesity. This is very important second part, from where we will see about the treatment methodologies, what are the major available strategies, available interventions, available drugs that decreases the obesity, and we can do from this. Current research options can be grouped into followings. Algorithm for the assessment and stepwise management is very important for the person, and diet and supplements are also important to check, and to intake our nutrition should be in proper way. So physical exercise is very important. As we increases physical activity, then we can also decrease the obesity. And the behavioral therapy is also common. This is very common due to multiple religious problems or issues that increases the behavioral problems or depression and other problems in the body. Non-pharmacological treatments are also common, and pharmacological therapies and stop regain of the maintenance of the therapy is also essential for the obesity. Surgical bariatric metabolic surgery procedures are also given, and novel targets, biological and technological methods will be explained in this next coming slides. Now we go in the first line about the lifestyle modification, that is diet and supplements and physical exercise is very essential for every disease, including obesity. It's the first choice and very important for the stopping of obesity. So supplements, if there is a lacking of vitamin D and some other supplements should be taken, and exercise should be done according to the different procedures for reducing the obesity, abdominal obesity or other parts of the obesity. So these are the very essential things that can reduce 80 to 90% of the cases of obesity. Now we go towards the physical exercise that is essential and proven from different research papers about the physical exercise that can reduce the obesity and increase the microbiota of the body and decrease the quality of the risk factors. So we should continue from this. Now we go towards the non-pharmacological classification of the drugs that increases the that can be used for the obesity in different conditions or overweight of the person, either male or female.
So in the first line, you can see ketogenic diets are there. That is also commonly used nowadays. And in early stages and in fast condition, you can reduce the obesity. But there is a multiple problem taken from the ketogenic diet. So now we go towards the supplement vitamin D exposure or supplement is also important to reduce obesity. This is also taken from the different reports or research papers. Nutrigenomics and nutraceuticals are very important, like from the Eastern medicine and some other herbal medicines or polyherbal formulations can decrease the obesity from nutrigenomics and nutraceuticals that is like to the different persons. Now we also change the person's cognitive behavioral therapy. For example, if behavior of the person is different and the myth is there, then we can reduce the cognitive behavioral therapy. So now we can also give the herbs and herbal formulation for those people, and the sleep timing should be adjusted, and the stop smoking is also essential for all the peoples. So stop weight gain medication. If some medicines are there that increases the body weight, so it should be stopped if the person is already overweight or obese. So these are some medicine that also induces the body weights, so should be stopped. Endurance exercises should be done. Sitting 2 hours in cold at 17 centigrade also reduces obesity. Herbs and polyherbal formulation I have also explained in the first, third or fourth line. Now we go towards the Eastern medicine, traditional Chinese medicine that is available in different plants form and different formulation in Chinese herbal formulation that can reduce the obesity in different ways. You can see there is a fat, different fat, retroperitoneal fat, or ectopic fats, and multiple brown fats or other types of fats are also there. So that can affect on different organs of the body. For example, it increases the GIT problem, gut on the gut, SCFA, saturated fatty acids, increases the gut problem, and the brain that is also increased leptins. And on the other hand, muscle, if we see, then also decreases obesity and increases the potency of these organs, including liver and adipose tissues. So multiple names are artemisinin, for example, is given, curcumin is given, silastrol is given, capsaicin is also given, berberine, and Gemnima sylvester, and multiple other plants are also there that decreases the obesity. And these are proven Eastern medicine that can be given to the person. So pharmacological, but there is pharmacological approaches are also available through different allopathic medicines. For example, currently available pharmacological approaches are responsible to reduce weight by 3 to 9% compared with lifestyle therapy alone, but are associated with unfavorable side effects or adverse effects are also there. So we go towards the future targets include leptin that should be reduced, increased in the body. Ghrelin, a hormone, is also released from the GIT, gastrointestinal tract, or from the stomach, or from the pancreas. That is appetite suppressant. So should be given. Peptide YY is research is going on, and peptide YY that is also important. Semaglutide, tasophenicin, T3, for example, triiodothyronine, the T3 or T4 hormones are also important for reducing obesity. And finally, we go beta 3 receptor agonist. Nowadays, study is going on in different Thailand and other countries. Reports are coming that also decreases the obesity, especially for abdominal obesity. Further, I will also explain liraglutide that is also used for diabetes and also reduces the obesity in different populations of people. Now, weight loss medication in the past, present, and future, what are they and what they have done in previous years? You can see fenfluramine, dexfenfluramine, phenylpropanolamine, and rimonabant and sibutramine. These are also commonly used in previous years. Some due to some side effects, some drugs have been reduced or obsolete, and some are also given nowadays. Now, in the current therapy, you can see phentermine,
early state that is also available nowadays that causes some problem and a side effect. For example, phentermine causes palpitation and elevated blood pressure is increased through this one. This is a very old drug, 1959, and presently it is also used. Now we can see another early state. This is also common drug, very commonly used, that decreases the lipid pancreatic lipases, that reduces the pancreas lipase enzyme and decreases the obesity. On the phase 3 trials and current application to FDA, EMA, locurcirine is a new drug that has potential vascular that causes valvular heart diseases and psychiatric problem or cognitive problem in the person. Bupropion or naltrexone, that is opioid taken from opioid, that causes seizures, palpitation, and transient blood pressure elevations. Now we go to topiramate, phentermine. These are combination of drugs given that causes depression, suicidal ideation, and cardiovascular events, memory loss, and birth defects in pregnant women. And another drug that is GLP-1 analogs that also causes, for example, semaglutide, liraglutide. These are the GLP-1 analogs that causes pancreatitis. So multiple drugs are available that are now in different combination and different formulations are there, but they have side effects. So we have to choose another one that should be given and have no side effects. Another trial that is going on, I have also explained in the previous slide, skin patch mechanisms. Now, what is this one? This new patch to beat fat. Basically, this is taken, researchers here have come up with a microneedle skin patch that allows anti-obesity drugs to be administered with a lower risk of side effects. Especially these are topical, applied only on the abdominal cavity that will not circulate in our whole body. So specifically, drug will be in small quantity, and that affects only on the specific area given in the abdominal obesity. For example, you can see from the above figure and in the below figure, there is a decrease in obesity. And here is the patch that attaches with the needle-like structure that attaches to the skin area. So we see on the trial what were the people that were given this trial, and there is decrease in obesity in those people. So in different Thailand and other countries, this trial have been done. Now we'll go towards another therapy that is very common nowadays due to another problem or different situational or personal problem. If there is increase in BMI, for example, more than 40 BMI is there, then there is no chance to treat from drugs. So we have to only treat with the help of bariatric surgery. So bariatric surgery is a different type of surgeries that reduces the GIT absorption of the food and reduces the weight of our body. So Roxanne Y, gastric bypass is there. You can see 4 types of surgeries are there that reduces the overall GIT and cut the GIT, and the absorption of the drugs is reduced. Absorption of food is also reduced. For example, biliopancreatic diversion, BPD, is also shown here on the other hand, and the restrictive procedures, gastric banding is also shown, vertical banding, gastroplasty is there, and jejunal ileal bypass is also shown here. So different types of surgeries are available on depending on different person, different situation of the people, and having high prevalence of obesity, more than 40 or more than 35 BMI. If there is greater than this, then surgery is recommended by different doctors. So circadian regulation of energy metabolism is also there. I've explained in the diabetes lecture, but I am again explaining here. We have to go with our central and peripheral clocks of the body. Different clocks of the body are there. You can see that is moving in our time. So we should take our diet timely. For example, from the morning, we can take the meal, breakfast, and in the mid of the day, we can take the
other lunch and evening dinner. So these are the major three, and snacks also can be given. So circadian rhythm is from the research of 2017. Three scientists were given the Nobel Prize about searching this mechanism about circadian rhythm. So we should adopt mechanism that decreases our obesity through using this circadian chronopharmacology or chronobiology. Now coming to the another therapy that can be given to the patients, that is fecal microbiome exchange method. This is again, you can see cell metabolism paper is given here, clinical and translational report, improvement of insulin sensitivity after lean donor feces in metabolic syndrome is driven by baseline intestinal microbiota composition. There is an exchange of fecal metabolism feces from one a healthy person to a obese person, and there is a increased activity or a person and decreased obesity of that person. So there is another mechanism, that is fecal microbiome exchange method, is also shown promising for the obesity of person having 35 or 40 BMI. So we go towards the technological methods are there using artificial intelligence or different devices. For example, we use Samsung Health software or application and multiple food application to reduce our obesity. And we can use supplements or different robots or other mechanism to decrease the obesity. Now coming to the V block therapy for obesity. This is again very important, that reduces the vagal nerve, that is cranial 10th cranial nerve taken from the brain. So that is parasympathetic and increases appetite of our body. So at a time when the person is eating, then if we apply vagal nerve block device, that will reduce our activity of eating and reduces the overall weight. Now coming to another therapy, that is aspire assist therapy. That is method if a person is taking food for a time, and there is again attachment of pump. Aspire pump is attached, and from the stomach that is removed after eating if the person has eaten the food, then after a few minutes, this is pump is allowed to remove this from towards the gutter or other parts to remove from the body or from the stomach. So aspire assist is also a new technique that is also used. Now we go towards the balloon therapy. This is again new emerging therapy that is given to the diabetes patients. For example, balloon therapy, endoscopic bariatric surgery is there. If we go to the person from the oral cavity to the stomach, then these balloon will also be aired through, so increases their weight and size, and we will take the drug in very small, our eatings behavior will be reduced due to the saturation of the stomach. So this is the new method, the balloon therapy. If we go towards the another method, that is endo barrier, gastrointestinal sleeve method is also there. If we apply, if the person is having very heavy weight, then we apply this plastic endo barrier system, and all the absorption will be stopped. Only few absorption will happen, or we can give for the person from different routes and other routes. For example, parenteral or intravenous therapy or nutritional therapy will be given to that person, and we can stop the obesity of that person. After a reduction of obesity, we can remove this patch or endo barrier from the body. So this is again a new method that can be given. Go towards the architecture of a smart system for obesity control, as I have explained in technological method or artificial intelligence, that is also increasing the activity to reduce obesity. For example, you can see Wi-Fi is attached with the person, and person is moving and showing what miles he has covered or she has covered, and there is a pedometer to measure PA, and pressure sensor is also given, and different patches are attached
that will go towards the Android system, our internet system, and will show what you have done today and what is reducing obesity and what you have taken from the food. So input is also checked and output is also checked through this mechanism. So now we go towards the final slide. That is, thank you very much for your listening, for your attention. Thank you. So this is the slide that I have worked in the Aga Khan University, Karachi, for my PhD in different, in diabetes and metabolic syndrome and cardiovascular problems. So if you have any question, please, you can ask. Yes, please. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज ये पूछनी थी। आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया और ये सारी चीजें हैं समझ में आई, लेकिन क्या सर्जरी के जो करने इसके अपने साइड इफेक्ट्स उस चीज से ज्यादा नहीं है कि लोग खाना पीना ही कम कर दें? क्योंकि मेरा ख्याल है गैस्ट्रिक सर्जरी या जितनी भी चीजें आप बता रहे हैं जी सर, बिल्कुल बताएं बताएं। तो मतलब अब ये जो है सर्जरी के हवाले से कि इसके अपने साइड इफेक्ट्स ज्यादा नहीं होंगे इतने ज्यादा कि अब हम उसको कहते हैं अगर हमें खाना ही कम करना है तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि हम थोड़ा सा अपना खाना या लाइफस्टाइल या ये चीजें ही सिर्फ चेंज कर लें? मतलब क्या आपका ख्याल है कि ये इसके साइड इफेक्ट्स बाद में कुछ सामने आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी तो 35 40 50 साल की उम्र के बहुत सारे लोग हैं मेरे जानने वाले में, वो करवा रहे हैं ये सब चीजें, वजन भी कम किया। जब मैंने उनसे सिर्फ मालूम किया कि भाई आपने क्या फायदा हुआ, तो कहने के बाद इससे ही होगा कि हम खाना कम खाते हैं, छोटे बच्चे की तरह खाना खा रहे हैं। तो अगर छोटे बच्चे की तरह हम खाना वैसे ही शुरू कर दे तो इतने बड़े जो साइड इफेक्ट्स है मेरा ख्याल है कि होंगे, लाजमी सी चीज है। ये कुदरत के काम में हमने इतनी बड़ी दखल अंदाजी की है, तो आपका क्या ओपिनियन है? जी बिल्कुल सही कहा। आपका प्रीवियस लेक्चर में मैंने सुना था जो कि आपने कॉस्मेटिक्स के ऊपर, एंटी एजिंग के ऊपर दिया था। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। आई वाज अप्रिशिएटिंग यू कि यू हैव डन वंडरफुल वर्क। और उसमें बहुत ही आला आपने एक्सप्लेन किया कि जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि मेडिसिन भी साथ खाऊं और साथ खाना भी खाऊं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर उससे पहले हम एहतियात कर लें, जैसे आपने स्पेशली बताया कि हम पहले से ही उसको रोक लें और चीजें जो है कम से कम इनटेक करें, जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा। आउटपुट हमारा है नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और इनपुट हम ज्यादा बेवरेजेस ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, तो ये इंक्रीज होगा। और उसके जो आपने कॉम्प्लिकेशंस पूछे हैं बिल्कुल राइट है, वो 100% कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज्यादा है। जो आप बैरिएट्रिक सर्जरी की बात कर रहे हैं कि 100% उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनमें जो है वो कुछ सप्लीमेंट्स दे देते हैं उनको, कहें ये भी साथ आपने खाना है, प्लस उनकी मेडिसिन जो है वो स्पेसिफाई कर ली जाती हैं, कुछ वो इंजेक्टेबल फार्मूलेशन देते हैं, क्योंकि सारा जीआईटी उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, कट हो जाता है, डिफरेंट सर्जरीज से उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता और डिफिकल्ट होता है। तो इनकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ये लोग उनके लिए करना चाहिए जो कि 40 से ज्यादा बीएमआई रखते हैं। बीएमआई अगर उससे 40 से ज्यादा है या उससे हाई है, 50 के करीब है, फॉर एग्जांपल अमेरिका में ये ज्यादा कॉमनली चल रहा है बैरिएट्रिक सर्जरीज का। लेकिन अगर पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं तो जो आपने मेथड बताया है वो बिल्कुल सही है, 100% राइट है। उसमें हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स को साथ लेके चलना चाहिए, और साथ साथ जो है ग्रीन टी है, मल्टीपल अदर जो थेरापीज हैं कॉमनली हम यूज करते हैं, एक्सरसाइजेज हैं डिफरेंट, उसको अगर यूटिलाइज करेंगे देन वी कैन इजीली हैंडल दिस और कंट्रोल दिस ओबेसिटी। बिल्कुल आपने सही फरमाया है। जी मैं एक चीज मैं ऐड करना चाह रही हूँ। अब बैरिएट्रिक सर्जरी की आपने बात की है, तो बैरिएट्रिक सर्जरी के ऐसे देखें, बीइंग अ सर्जन कोई मुझे लगता है कि ऐसे कोई इसके ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन इसको मोस्टली जो कराची में तो बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा यहाँ पे बैरिएट्रिक सर्जरी हो रही है, क्योंकि अब ये एक फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी करते हैं। मेजॉरिटी 100+ अगर खवातीन है या हजरात हैं या तो उनको मेजॉरिटी को स्लीप एपनिया है। अब वो 100+ अगर हम सिर्फ डाइट से करने पे आएंगे ना तो वो एक तो पॉसिबल ही नहीं है। जब वो 100+ क्रॉस कर लेता है तो फिर आपकी सिर्फ डाइट, वो कोई बहुत ही कोई मोटिवेटेड हो तो वो फिर अपनी ओबेसिटी को टारगेट करेगा तो वो कम करेगा, वरना अदरवाइज जो हमारे यहाँ के अगर 100+ पे लोग पहुंच जाते हैं तो वो इसीलिए पहुंचते हैं कि उनके अंदर वो चीज नहीं है।
फिर उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। स्लीप एपनिया सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम करता है कि सोते वो सो ही नहीं सकते, सोते में उनकी सांस या खर्राटे बहुत ज्यादा वो ले रहे होते हैं। तो वो ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यहाँ तो खैर कराची में बहुत कॉमन है बरियाट्रिक सर्जरी। उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि आपके मैदे का मुंह एक तरह से छोटा कर दिया, ठीक है, तो उसमें आपकी डाइट लिमिटेड हो जाती है। मैंने ऐसा नहीं देखा कि उसमें कोई बहुत ज्यादा उनको मेडिसिन दी जाती है या उनको, हाँ डाइट रिस्ट्रिक्शन होती है। नहीं वो देखिए, ऑब्वियसली इतना मैंने थोड़ा वो ही खाता है, थोड़ा ही खाता है बंदा कि वो उसको भूख ही कम लगती है। तो वो आहिस्ता 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 उसका वेट फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो वो फिर जब एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता है फिर उसको वो मेंटेनेंस पे रखता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि स्पेशली जो है 40 BMI है, 50 है, 45 है, उनको तो सर्जरी में लाजमी देना चाहिए, लेने चाहिए। वो उसमें रिस्क होता है कि वो उसको बचाना चाहिए हमें, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन 40 से अबव चली जाए BMI तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसको हर हालत में वो करना होगा। लेकिन जो पहले बंदे हैं जिनका जेनेटिक्स में, एपिजेनेटिक्स में नहीं है कि वो जो है ना ये कन्वर्ट हो सकते हैं, 40 तक जा सकते हैं, या ओवर वेट है, 30 है जिनका, 35 है, उनको तो हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको भी सर्जरी करवा दी जाए, और उनसे आपको पता है कि हमारी अब्जॉर्प्शन होती है, विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन हो रही है, आयरन की हो रही है, GIT में, ये सारी अब्जॉर्प्शन के मुख्तलिफ रूट्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं देयर, तो वहां पे वो स्टॉप हो जाएंगी। और सप्लीमेंट्स से या मुख्तलिफ तरीकों से हम उनको दे के कवर करेंगे, या हम न्यूट्रिशनल जो थेरापी जो है वो देंगे, इंट्राविनस जो है न्यूट्रिशनल जो थेरापीज हैं वो हम दे सकते हैं। ये सिर्फ उन पीपल के लिए जो ओबीज है, ज्यादा ओबीज है, ओवरवेट जो है, उनके लिए हम ये मेथड्स जो है कॉमन वाला यूज कर सकते हैं। सारे फिजिशियंस जो है ना, सिर्फ अगर एक बात पे एग्रीड हो जाए ना कि लोगों को ओबेसिटी के उनके क्लिनिक में जब भी कोई पेशेंट आता है ओबीज लगता है, तो उसकी काउंसलिंग ही अगर हम स्टार्ट कर देना, तो एज ए फिजिशियन ये हमारा बहुत बड़ा रोल होगा कि या जी उसको इस बिल्कुल लेवल तक पहुंचने ही ना दिया जाए। तो ये बहुत मैंडेटरी बिल्कुल है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं, आप सबके पास भी आते होंगे, मुख्तलिफ दवाएं लेकर आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब इस दवा के बारे में बताइए, वजन कम करने के काम आएगी। तो मेरा सबसे जी अच्छा आंसर उनको यही होता है, मैं कहती हूँ अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मेरे आसपास जो लोग हैं मैं उनको खिलाती और वजन कम कर देती। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट। क्योंकि यही बिहेवियरल थेरापी है ना बेसिकली, कि अगर हम उसको बिहेवियर को एडजस्ट कर दें और उसका डिप्रेशन कम कर दें, उनका जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, और जो ईटिंग बिहेवियर है वो कम कर दें, लेट नाइट खाना है फॉर एग्जांपल, अगर वो खा रहे हैं उसको स्टॉप कर दें, फिर उनको देखा जाए कि कौन सी चीज इसको देनी चाहिए, इसकी जेनेटिक्स क्या है, उसके मुताबिक अगर डाइट दी जाए, प्लान दिया जाए, उसके मुताबिक अगर वो अमल करें, तब इसको रोका जा सकता है। यानी हम चाहते हैं कि अर्ली एज में, यूथ एज में ये प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, प्रोग्राम, और फिर इसको ऑटोमेटिकली हम आगे जो है ना बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं। अगर शुरू से हम इनिशियल स्टेप नहीं लेंगे तो ये फिर काम बढ़ता जाएगा, और रूट काज है मल्टीपल डिजीजेस की, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इसमें डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, और इसमें स्लीप एपनिया है, मल्टीपल अदर डिजीजेस आर आल्सो देयर। सो इसलिए कि हमें अर्ली स्टेज में यूथ को ही स्टॉप करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको स्पेशली पहले भी बताया था डायबिटीज की जो प्रेजेंटेशन थी, उसमें कि डायबिटीज जो है वो 20 साल पहले होती है, कोई आज की नहीं होती है, एक दिन के बाद हो गई है दूसरे दिन। ये 20 साल से स्टार्ट होती है, क्रोनिकली होते होते अपीयर जो होती है 40 साल के बाद होती है। मल्टीपल डायबिटीज केयर के पेपर आप उठा लें, उसके 18-15 इम्पैक्ट फैक्टर से ऊपर है, उसमें दिया हुआ है। बहुत सारे लैंसेट के पेपर हैं, बहुत सारे अदर इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स के पेपर हैं, तो उनमें ये सारा कुछ दिया हुआ कि उनकी जेनेटिक्स क्या है। तो हमारी जेनेटिक्स एशियन से है, तो इसमें होना तो है। लेकिन अगर हम ज्यादा ओवरवेट पे चले जाते हैं, जेनेटिक्स है किसी बंदे के में ऐसी होती है जिसको हम ड्रग से नहीं कंट्रोल कर सकते, उसके लिए ये बैरियाट्रिक सर्जरी इज बेटर। जिनका बिल्कुल यानी कि इतना नहीं है एज कि वो ज्यादा उससे क्रॉस कर जाए, 40 से या 35 से ज्यादा क्रॉस कर जाए BMI, तो उनके लिए तो कम से कम ये हम थेरापी कर सकते हैं। और बिहेवियरल थेरापी और मेडिसिन या हर्बल थेरापी जो है दे के, या जो तरीकाकार है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है। जी सर मेरा ख्याल तो एनी यह अदर है कि क्वेश्चन?
मैं ये कह रहा था कि काउंसलिंग तो देखें, यहाँ पे कोई भी बच्चा आए, बड़ा आए, लड़की आए, आप किसी को ये काउंसलिंग जब शुरू करते हैं कि जी ये नहीं खाएं, ये नहीं खाएं, अरे सब बच्चे खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक है सब पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक है सब पीते हैं, वो भी तो पीता है, वो भी यही तो पीता है, पॉइंट हम आप इतने सही नहीं बता रहे पीते। हैं। अब इसके अंदर हम क्या करें? दूसरी चीज ये कि देखिए, आप दोनों इस बात पे तो मुत्तफिक है कि सर्जरी हो 35 40 प्लस BMI पे, लेकिन अल्टीमेटली उसका फायदा जो बता रहे हैं वो ये है कि वो कम खाएगा। तो भाई तो कम पहले क्यों नहीं खा रहा वो, और कम खाने फिर ना, कम क्यों ये नहीं, पॉइंट वो कम खाने से फिर क्यों नहीं होगा? खाना तो उसको कम ही है ना। आपने फिर आपने ये असल बताया में कि जी एक जो अहम सर इशू मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोटा की हमने बात की है, जो माइक्रो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी है। गट इज अनदर CNS, ये भी एक ब्रेन है जो हमारी GIT है। तो यहाँ पे क्योंकि वो पसंद करते हैं कि जी मीठा आप खा रहे थे तो मीठा खाएं, उसके माइक्रोबायोटा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको लाइक करना शुरू कर देते हैं, और उन्हीं की वजह से डिमेंशिया हो रहा है, उसी की वजह से डायबिटीज हो रहा है। उसी का लिंक जो है अब लगाया जा रहा है मल्टीपल डिजीजेस पे। पार्किंसन डिजीज हो रही है, ओबेसिटी हो रही है, ब्रेन से अब जो है हार्मोन या रिसेप्टर देखे गए हैं जो कि इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं और उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये भी बात है कि हम माइक्रोबायोटा की मर्जी से खाना ना खाएं, हम अपने मुताबिक जो है डाइट है, हेल्दी डाइट है, उसको प्रेफर करें किसी भी तरीके से। जब वो हैंडल हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी, फिर आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। मैं जब आगा खान में गया तो यहाँ से पहले मेरा मोटापा बहुत ज्यादा था। मैं आगा खान में जब गया तो उन्होंने कहा जी टाइम पे सुबह खाना है, 2 घंटे आपको मिलेगा, 7 से 8 या 9 बजे तक, 2 या 3 घंटे हैं इसके अंदर खाना खाना है। वहां पे बेस्ट सिस्टम था। तो मैं भाग के जाता, उधर लैब से भाग के खाना खाता है, 1 घंटे में खा के फिर भाग के आता। इधर उधर दौड़ लगी रहती थी, रिसर्च वर्क था। कभी एनिमल हाउस चला गया, फासले में है उधर आगा खान में, कभी उधर रिसर्च जो MDL लैब है उधर चला गया। इसी तरह करते करते उन्होंने कहा दोपहर का खाना 2 घंटे है, इसके अंदर जिसने खाना खा ले, अगर नहीं खाएगा तो बाद में उसको ज्यादा पैसे दे के मैस के अलावा जो है वो खाना पड़ेगा। फिर शाम को उन्होंने 6 से 8 बजे टाइम रखा कि इन 2-3 घंटों के अंदर जिसने 9 बजे तक खाना खा लिया उसको मिलेगा, नहीं खाएगा तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस जो है ना वो ज्यादा पैसे में पे करना पड़ेगा। मैस का टाइम था 30 रुपए, 40 रुपए जो था वो मिलता था, उसमें खाने 2 आपको रोटियां या नान मिल जाते थे, बड़े अच्छे मतलब खाना मिलता था वहां से, साफ सुथरा था। तो मैं जब उस प्रैक्टिस पे आया, खाना खाता गया तरतीब से, सर्केडियन रिदम की बात कर रहा हूँ, माइक्रोबायोटा की बात कर रहा हूँ। तो इन चीजों को जब मैंने देखा किया तो ऑटोमेटिकली मेरा वेट कम हो गया। तो मैंने समझा कि ये देखें, अब इतना वर्क किया और ये भी किया, टाइम पे खाना खाया, तरतीब रखी, सिस्टमेटिकली हमने उसको खाना खाया था, और टाइम शेड्यूल को कन्वर्ट किया, सर्केडियन रिदम को कन्वर्ट किया, तो उससे मेरा जो है वेट ऑटोमेटिकली लूज हो गया। अब जो है मैं बिवरेजेस, पहले मैं मीठा बहुत ज्यादा खाता था, यानी जलेबियां हो गई, मुख्तलिफ जो चाय होगी मीठी, मैंने छोड़ दी सब। अब मुझे पसंद ही नहीं है वो, मैं नहीं पीता। मैं कहता हूँ कोल्ड ड्रिंक इधर पड़ी हूँ जितना मेरे सामने, मैं उसको हाथ ही नहीं लगाता। तो ये आदत हम शुरू से चेंज करें। हमारे एक क्लास फेलो था, लड़का गौरी है, आजकल वो उधर दूसरे मुल्क गया हुआ, कीनिया या साउथ अफ्रीका में। तो वो जो है उसके वालिद साहब को शुगर थी, तो उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही शुगर इनटेक नहीं करेंगे। उन्हें पता था कि वो जेनेटिक्स में है, हम में भी कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने शुरू से ही स्टॉप कर दी। तो इस बिहेवियर को हम क्यों नहीं चेंज कर सकते? लोगों का ये है कि आज शादी है, बस ये आखिरी शादी है, इसमें जितना खाना है खा ले, ये आखिरी हमारा बस खाना है, इसके बाद नहीं मिलेगा। तो इससे तो जो है ना प्रॉब्लम मजीद बढ़ेंगे। तो आपकी क्या राय है सर अब्दुल समी देखिए साहब? डॉक्टर साहब, हमारे बीइंग अ फिजिशियन हमारे पास देखें ओबेसिटी के साथ जब आ रहे हैं तो वो तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन हम जी सबके बिल्कुल। पास ना जितने भी प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है सबके पास मल्टीपल, एटलीस्ट 2 से 3 या 4 मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट बिल्कुल वेरी करता है। हर एक पे बिल्कुल बेरियाट्रिक बिल्कुल सर्जरी अप्लाई नहीं कर सकते, हर एक को हर्बल बिल्कुल डाइट नहीं दे सकते, हर एक को एक्सरसाइज नहीं बता सकते। तो जब हम हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगे, हम डाइट प्लान बनाना जानते होंगे, तभी हम पेशेंट को काउंसिल भी कर सकेंगे। तो एटलीस्ट हमें बिल्कुल बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड ये बहुत जरूरी है कि उसको डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस प्रॉपर तरीके से उसको समझाया जाए। बिल्कुल राइट, दिस इज राइट, 100% राइट। अस्सलाम इसमें न्यूट्रिशनिस्ट जो है वालेकुम या रहमतुल्लाहि डाइटिशियन वबरकातुहू। है, ये भी बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। इसमें मिलके एक पूरी ग्रुप होगा जो कि इसको कंट्रोल कर सकता है, जैसे अमेरिका में, देखिए कनाडा में। मैं तो खैर एक बात जानती हूँ कि हर फिजिशियन
जो भी मेडिकल डॉक्टर है या हर्बलिस्ट है या हकीम है या होम्योपैथी के वॉट उसको इतना पता होगा कि उसने अपने मरीज को बताना है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ठीक है, तो इसमें अगर हम ये इंतजार करते रहेंगे कि डायबिटिशियन बताएगा और न्यूट्रिशनिस्ट बताएगा, तो हम कभी भी वो पेशेंट के लिए वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इट्स बेटर कि हमारे पास अपने पास खुद डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट रिजीम्स होनी चाहिए सबके पास, ताकि वो जो भी पेशेंट आए और वो आपके पास से, क्योंकि अगर मरीज एक दफा आपका मरीज है आपके पास आया तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो आप ही जो है ना उसको सारी चीजें बताएंगे। तो अगर आप उसे ये कह देंगे कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओ, तो वो कभी भी नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अमेरिका में या अदर कंट्रीज में जो एक नई थेरापी आ रही है वो प्रिसीजन मेडिसिन है, इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन है, स्पेशली जो जेनेटिक मेडिसिन है, कि एक को प्रिसीजन करके कि इस इंडिविजुअल में क्या प्रॉब्लम है, उसकी जेनेटिक्स को जान के फिर जो है उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे तो इतना खर्चा कोई नहीं कर सकता, ना लेबोरेटरी का टेस्ट करवा सकता है, ना ये सीआरपी करवा सकता है, कितने महंगे टेस्ट है। तो इसलिए वो हम जो रिजीम है ऑटोमेटिकली वही जो बाहर से आती हैं मेडिसिन वो पाकिस्तान में अप्लाई हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पे रेशियल का फर्क है, एथनिसिटी का फर्क है, एजिंग का फर्क है, डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट जो मेडिसिन हैं वो देनी चाहिए। डिफरेंट हर्बल जो रेमेडीज हैं उनमें भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उनको प्रॉपरली अगर हम देखें, डायग्नोज करें प्रॉपरली, फिर उसको अगर दें, अप्लाई करें, और वो भी राजी हो, ये नहीं बंदा कि वो बंदा भी राजी नहीं है और वो वर्किंग में नहीं है, फिर ये काम कभी भी नहीं हो सकता। If intentionally person is ready for the reduction of obesity, then this is possible. Otherwise, no control is possible for obesity. जितनी भी आप मेडिसिन ले लेंगे, साइड इफेक्ट्स भी लेंगे, 6 महीने इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये क्विक थेरापी है। लोग कहते हैं आज मेरा इलाज हो जाए, तो इससे फिर प्रॉब्लम तो आएंगे, साइड इफेक्ट्स आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे। जो हमारी जो नॉर्मल फैट्स हैं वो हमारी होनी चाहिए, विसरल फैट्स हैं फॉर एग्जांपल। जो एक्टॉपिक फैट्स है उसको हमने खत्म करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लिपोसक्शन है, जैसे उसको रिमूव कर देते हैं लिपिड को, जो हमारे एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यूज हैं वो भी इस्तेमाल हो रही है। तो है तो बहुत सारी टाइप, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो आप कीटोजेनिक डाइट है या फिर इनके हर्बल मेडिसिन हैं वो देते हैं, लोगों को रोकते भी हैं कि ये चीज ना खाएं। तो ऑटोमेटिकली जब कोई बंदा अमल करेगा, इंप्लीमेंट करेगा अपने ऊपर, तब भी वो कामयाब होगा, ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकता है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स आर देयर, वी कैन डू। अगर इस पे पॉसिबल बंदे इन्वॉल्व हों, अगर वो क्विक चाहते हैं तो फिर ये मेडिसिन ले लेते हैं कि जी हमें मेडिसिन लिख दें, इसलिए वो ज्यादातर डॉक्टरों के पास जा रहे हैं और मेडिसिन लिखवा के अपना फौरी तौर पे इलाज कर रहे हैं। और उसके बाद रीगेन जो है इसका बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आपने वेट कम कर लिया, फिर आप कुछ अरसे के बाद फिर बढ़ा लेंगे, फायदा क्या हुआ? वही है कि आप जब तक डाइट कंट्रोल, जैसे अब्दुल समीर साहब ने कहा है कि डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, माहौल के मुताबिक नहीं कन्वर्ट करेंगे, सुन्नत के मुताबिक चेंज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट चेंज यूर सेल्फ और अदर पर्सन, किसी दूसरे को भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो लिहाजा उसका माइंड जो है सेटअप वो चेंज करना जरूरी है। तो उसके लिए मल्टीपल थेरापीज है। आपकी जो राय है बिल्कुल वो भी राइट है 100%। अकॉर्डिंग टू दी पर्सन, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल, वी हैव टू अप्लाई दी स्पेसिफाइड ड्रग्स, और उनके बीएमआई के मुताबिक जो भी वेस्ट सरकमफ्रेंस है उसके मुताबिक हमें उसको देना चाहिए, और उनके मुख्तलिफ डायग्नोसिस के टेस्ट करवाने चाहिए। विद इन फ्यू डेज और फ्यू ईयर्स दैट कैन बिकम कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लमैटिक और अदर डायबिटिक पेशेंट में भी जो है वो हो सकता है किसी भी हालत में। एक बंदा था इधर एचबीएल में काम करता था, कुछ अर्सा पहले, साल पहले मुझे मिला। मैंने उसे कहा यार आपका ओवर वेट है, बहुत ज्यादा वेट था उसका, कि आप जो है ना इसको छोड़ दें, चीजें एहतियात करें, ग्रीन टी इस्तेमाल करें, जरा वॉक करें, मल्टीपल ड्रग्स, उसको चीजें बताई हैं कि एहतियाती जो चीजें हैं वो करें। लेकिन कुछ अरसे के बाद मैंने देखा आई के ऊपर रिटेनो आई पे ग्लासेस लगाई हुई थी, और वेट भी उसका लूज हो गया, डायबिटीज का भी शिकार हो गया, मल्टीपल अदर जो डिजीजेज हैं वो सामने आ गई विद इन 1 ईयर, मेरे सामने हुआ है। तो ये चीजें हैं कि हम लोग उसको प्रेफरेंस नहीं करते। फिर लोगों, डॉक्टरों के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि किसी को इतना टाइम दे, समझाए और पूरा कन्वेंस करे, उसके पास भी इतना टाइम नहीं। मुख्तसर आए जी ये ले, वो तो गाहक बना रहे हैं भाई, हमारे पास आते जाएं और डेली दवाई लेते रहे, सारी जिंदगी हमारे ये कस्टमर बने रहे। तो ये भी इशू है कि किसी के पास टाइम नहीं है कि उसको प्रॉपरली गाइड करे, और अगले के पास भी टाइम नहीं है कि वो प्रॉपरली पूछे। क्यों सर, क्या इसकी राय है आपकी?
सर मेरा ख्याल तो यह है कि जितने भी लोग हैं ना, अस्सलाम इंटेंशनली वालेकुम। कोई भी शख्स अपने आप को जो है ना वजन कम करने नहीं आता। जितनी खवातीन आती हैं, क्या उनके उनके बात क्या होती है? देखें हकीम साहब, अगले महीने जो है ना मेरी बेटी की शादी है, और वो कपड़े मेरे जरा जो है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे जरा सा लूज हो जाए, वो बहुत टाइट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल अगले सही। महीने जो है मेरी छोटी बहन की शादी है, 1 महीने का टाइम है और वो शादी हो गई, उसके बाद खत्म। आप अगर नोट करें कि कितने लोग बाकायदगी से करते हैं, कोई भी नहीं, मर्द हजरात है वो भी माशाल्लाह से इसी तरीके से हैं, खवातीन भी उनको थोड़ा सा, अब बाकी आप उन्हें वॉक बताओ, ये बताओ, आपके पास दवा नहीं होती क्या है? भाई आप ही के लिए बता रहे हैं, आपके लिए सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं भाई, ये चीजें तो हमारे यहाँ सुनने को तैयार ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इसके बड़े बड़े काम कर लेंगे, वही जैसे सर्जियां करवा लेंगे, ये करवा लेंगे, लेकिन जो बाकी काम करने के हैं उसमें से कोई भी नहीं है। बिल्कुल बस राइट। उस मिसाल क्या होती है कि जी वो फलाना है तो खाता है, फलाना इतना, जैसे गुटखे वाले से कहो कि भाई मैं तो बहुत कम खाता हूँ, कितने 3-4, बाकी तो 15 खाता है। तो अच्छा। ये सबका हाल है, तो इसमें आप किस मरीज को कैसे समझा सकते हैं? जी ये बिल्कुल हाल है, बस बिल्कुल, ठीक है, वो ये कारोबार पूरी ही चल रहा है फिर। जी अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम बिल्कुल वरहमतुल्लाहि राइट। देखिए वबरकातुहू। इसमें भी इसमें कसूर जो है, हम मेरा इसमें ख्याल है जब कि हम देखते डॉक्टर्स का हैं, ही है, फिजिशियंस का ही है, कि उन्होंने ही जी जी जब भी उनके पास पेशेंट आए तो उन्होंने कोई ना कोई मेडिसिन दी। अगर हम डॉक्टर्स और फिजिशियन ये मेडिसिन देना, मेरा एक प्रोटोकॉल है, मैं आई नेवर गिव एनी मेडिसिन। मैं कभी भी ओबेसिटी के लिए कोई आता है, मैं कभी भी गाइड नहीं करती, कभी उनको कोई मेडिसिन के लिए रिकमेंड नहीं करती। अगर हम अपना ये जो भी प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस हैं, अगर ये अपना एक रूल ऑफ थंब बना लें कि कोई मेडिसिन एडवाइस नहीं करनी, तो वो कभी भी नहीं, वो हो सकता है अभी नहीं, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ माइंड में ये बात जरूर हो जाएगी कि इसके लिए कोई दवा नहीं होती। लेकिन हम ये फिजिशियंस की ही खराबी है कि हम उनको कुछ ना कुछ ऑफर कर देते हैं, अब वो चाहे हर्बल, चाहे इंजेक्शन की सूरत में, चाहे वो दवाओं की टैबलेट्स की सूरत में, या सर्जरी। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, वो एक डिफरेंट, इट्स अ सिनेरियो, वो एक नीड होती है, वो एक क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, उसमें लोग करवाते हैं, तो वो एक अलग जी चीज है। लेकिन बहरहाल हमारे पास भी तो ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं ना, देते तो हम ही है, तभी तो पेशेंट नहीं, हम आके इसलिए, बताते हम हैं हमें। डॉक्टर साहब हम इसलिए उनको दे रहे होते हैं कि कम से कम उन दिनों, उतने दिन वो परहेज करते हैं, उतने दिन वो सब चीजें करते हैं, उतने दिन वो सारे लाइफ स्टाइल को वो अपनाने की शायद कोशिश आपको करते हैं, जब तक लगता करते हैं। अगर हम वो नहीं कर, लगता है वो हमें तो करते हैं लगता है तो फिर परहेज, वो तो कोई बेकार है परहेज ना। नहीं कर रहे होते हैं। परहेज नहीं कर डॉक्टर देखें, साहब। आपके पता नहीं, मेरे जो मरीज हैं वो तो फैमिली के हिसाब से, मेरे दादा के जमाने से उनकी औलाद, उनकी औलाद, उनकी औलाद, तो वो तो हमारे पास घूम फिर के आते ही रहते हैं, हमें पता है कि क्या क्या इनकी सूरत हाल हैगी, जो आम बाकी डॉक्टर्स के मैं नहीं कह सकता कि उनके पेशेंट किस टाइप के। हम तो एक फैमिली फिजिशियन टाइप के हैं, या ये कह लें कि वो हमारे मरीज तो हमारी खुद फैमिली है, कि हर एक की, हम उनके बाप दादा को हम भी उनके जान रहे होते हैं, वो हमारे, मतलब ऐसे भी लोग हैं कि जो कहते हैं हमने आपकी तीनों नस्लों से इलाज करवाया है, मतलब आपके दादा से भी किया, आपके अब्बा से भी किया, आपसे भी हम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारे बच्चों से भी अब आप करवा रहे होंगे। तो ये चीजें हैं, हर एक के पास अपने अपनी वो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। आपकी अलग सोच होगी, मेरी अलग होती है, मेरे जैसे मरीज हैं मैं उसी हिसाब से बात करता हूँ, आपके जैसे होंगे आप उन्हीं हिसाब से, लेकिन उनको तो कुछ ना कुछ इसलिए देना पड़ता है कि कहीं ना कहीं वो टिके जी तो सही। बिल्कुल वरना वो टिकता कोई नहीं है, वो दूसरी जगह चला जाता है, वो तीसरी जगह चला जाएगा, वो चौथी जगह चला जाएगा, आप कभी पूछ ले। बिल्कुल सही तिब्बे फरमाया, कदीम के बिल्कुल राइट अंदर है। जी तिब्बे जी, कदीम के आपकी बात अंदर जो बिल्कुल लाइन ऑफ सही है। ट्रीटमेंट है मैं वो, तो एक जनरली सबकी बात कह रही हूँ कि अस्सलाम जितने वालेकुम। भी प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है, वो सब अपना ये रूल ऑफ थंब अगर बना लेंगे, वरना तो जाहिर है वो हम नहीं देंगे तो किसी और के पास से अल्टीमेटली उसे मिल ही अच्छा, जाएगा। जितने यहाँ तिब्बे, मौजूद हैं ये सारे एग्री हो जी जाएंगे। जी, तिब्बे कदीम के अंदर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो बड़ा खूबसूरत दिया गया है कि पहले इलाज बिल तदबीर, फिर उसके बाद इलाज बिल दवा, और फिर इलाज बिल यद। तो जब हम स्टार्ट ही इस चीज से लेंगे कि हमने पहले तदबीर करनी है, यानी मरीज के मरज की बजाय मरीज को फोकस करना है और मरीज को ठीक करना है, तो सबसे पहली जो चीज आएगी वो उसके अंदर परहेज आएगा। और परहेज में सिर्फ गजा के ऊपर हम जोर नहीं दे सकते, बल्कि तिब्बे कदीम ने जो बड़ा खूबसूरत एक हमें असबाब सित्ता जरूरिया की शक्ल के अंदर 6 चीजों का एक वो पैकेट बना के दिया है, कि जिसमें उसकी नींद को, बेदारी को, उसकी हरकत जिस्मानी को, सुकून को, और हरकत नफसानी और सुकून को, इन सारी चीजों को जब हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और मरीज को इस बात के ऊपर कन्विंस करते हैं कि भाई तुम्हारा मरज उस वक्त ठीक होगा जब तुम खुद ठीक हो जाओगे, तो तुम मरज की बजाय अपने आप को फोकस करो। ये जिम्मेदारी है एक तबीब की। मुझे अभी एक कॉल याद आ रहा है, कन्फर्म नहीं, शायद ये बुकरात का कॉल है, कि वो कहता है कि हमारे पास लोग आते हैं बैंसों की तरह खाते हुए,
और हम उनको परिंदों की तरह चुगने पे लगा देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो ये जो तरीकाकार है ये आज का नहीं है, और ये मसला आज का नहीं है कि लोग मानते नहीं हैं। लोग माने या ना माने, तबीब का काम है लोगों को कन्विंस करना, गाइड करना। अब अगर कोई उसकी रहनुमाई लेता है तो जाहिर है वो फायदा उठाएगा और वही ऑपरेशन से बचेगा, और जो इस चीज की रहनुमाई नहीं लेता तो वो यकीनन उस चीज की तरफ जाएगा। अच्छा, अब अगर वो कोशिश भी करता है, परहेज भी करता है, और फिर भी उसका वेट बढ़ता जा रहा है, तो हम उसको ये कहें कि अब आपका ऑपरेशन नहीं होगा वरना ऑपरेशन से आपके नुकसानात होंगे, तो वो तो फिर डेथ की तरफ चला जाएगा। तो ये जो इलाज बिल तदबीर के बाद इलाज बिल दवा है, यानी अगर तदबीर से मसला नहीं हल हो रहा तो क्या करें, आप दवाई का सहारा ले सकते हैं। अच्छा, अगर दवाई से भी मसला नहीं हल हो रहा तो फिर क्या करें, फिर सर्जरी की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा और खूबसूरत जो है वो हमारे पास लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, तो हमें इस कंडीशन के साथ उसको लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें अपने मरीजों को कन्विंस तो करना चाहिए, लेकिन हर आदमी के पास मुकम्मल नॉलेज होना ये जरूरी नहीं है। तो अगर हम समझते हैं कि इस चीज के अंदर, फर्ज करें मैं समझता हूँ कि डाइट के मामले में मैं नहीं बल्कि मुझसे बेहतर फलाई, इस वक्त साइंस हर लिहाज से बहुत ज्यादा एडवांस होती जा रही है। डाइट में मुकम्मल एक फील्ड है और लोग उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं और वो अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि डाइट किस तरह देनी चाहिए। फिजियोथेरापी एक मुकम्मल एक फील्ड बन चुकी है और वो बंदा अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है कि आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है और कैसे जो है वो आपके इस मर्ज के अंदर एक्सरसाइज कैसे, यानी ये ओबेसिटी को ही ले रहे हैं तो कौन सी एक्सरसाइज ओबेसिटी में ज्यादा आपको सपोर्ट कर सकती है। अगर हम समझते हैं कि हम ये सारी चीजें सीख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई इसमें महारत नहीं रख सकता तो वो मरीज को इधर उधर लगाने की बजाय बेहतर है कि कुछ चीजें जो उसके पास है वो उसको दे और वरना उसको रेफर कर दे किसी ऐसे बंदे की तरफ कि जिससे उसे अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। तो अगर हम इस चीज का तहैया करें कि हमने इस तरीके को अपनाना है कि मर्ज नहीं बल्कि मरीज को ठीक करना है, और इसको जब हम अपना एक शिनाख्त बना लेंगे तो मरीज जब हमारे पास आएगा उसे पता होगा कि कीम साहब ने सबसे पहले मुझे आधा घंटा समझाना है और मैंने उनकी बातों को सुनना है, गौर करना है। अगर मैं नहीं गौर करूंगा तो मुझे यहाँ से कोई फायदा नहीं होगा। तो जब आपका एक ये बन जाता है ट्रेंड, जिस तरह लोग कहते हैं जी डॉक्टरों के पास जाते हैं वो तो बात ही नहीं सुनते, जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो मरीज जाते ही ये कहता है जी डॉक्टर साहब ये मसला है, मुझे बस कोई अच्छी सी दवाई दें और बस फारग करें। उसे पता है कि डॉक्टर ने परहेज नहीं बताना, लेकिन जब वो तबीब के पास आता है तो सबसे पहले वो नब्ज दिखाने की कोशिश करता है, फिर उससे परहेज पूछता है, फिर उससे ये पूछता है कि दवाई दूध के साथ खानी है या पानी के साथ खानी है, लेकिन डॉक्टर से ये नहीं पूछेगा क्योंकि एक माइंड बन चुका है। जब हम माइंड सेट करेंगे तो इंशाल्लाह उससे मसाइल हल होंगे। जी बिल्कुल सही सर आप आपने प्रैक्टिस फरमाया। करते हैं क्या? बेहतरीन बात नहीं, आप डॉक्टर प्रैक्टिस साहब, करते हैं? 100% एग्रीड आपने, वाकई बहुत जबरदस्त। ये जो है ना एग्जैक्टली देखिए मैं आपको बताऊं कि मेडिकल ट्रीटमेंट में भी कुछ इसी तरह से ही होता है, और ये शायद यहाँ पे तबीब ज्यादा है तो एक मैंने शायद मैं ही बाय मेडिकल बहुत होता है डॉक्टर के पास कि बहुत सारे सुनते भी हैं ऐसी बात नहीं है। जी जी तो बिल्कुल वैसे सही। आपने बहुत बेहतरीन एक्सप्लेन किया, बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। बिल्कुल ये तो है हकीकत के, अगर सुन्नत के मुताबिक हम अमल करेंगे और उसके मुताबिक हम चलेंगे तो ऑटोमेटिकली यही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ओवरवेट की शुरू में आयत भी मैंने उसमें बताई कि अगर कुरान मजीद में भी है, सुन्नत में भी ये है, हदीस में भी है कि आप जो है ना ओवरवेट ना हो, उससे ज़्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पसंद नहीं किया था। तो ये बेसिक अगर थीम हमारे माइंड में हो, हम वाटर इनटेक कम करते हैं, हम फास्ट फूड ज़्यादा इनटेक करते हैं, तो ये शुरू से हमारी जनरेशन अब चेंज हो रही है। ये कहते थे कि जी फास्ट फूड नहीं होंगे, केएफसी नहीं होगा और बाकी चीजें नहीं होंगी, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। अब किसको रोकेंगे? जो नई जनरेशन आ रही है उसमें तो ये डेवलप हो रहे हैं प्रॉब्लम, और इससे ज्यादा होंगे क्योंकि आप देखें ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग, और 10 कंट्रीज में जो है हाईएस्ट कंट्रीज में पाकिस्तान भी शामिल है। तो लिहाजा इसको अब रोकना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर हम कंपेन चलाएं और क्वालिटी जैसे उन्होंने बताया भाई ने, उसको मेंटेन करके इनको हाईलाइट किया जाए तो वी कैन स्टॉप सम ऑफ द पीपल, और उनमें से कई पीपल जो अगलों को रोकेंगे और ये काफी हद तक हम पहुंच सकते हैं उस लेवल तक। तो ये एक पूरी कंपेन है, पूरा प्रोसीजर है, पूरा सिस्टम है, जिसको अगर प्रॉपरली नियत के साथ, क्वालिटी के साथ और इसके साथ चलाया जाएगा
हिम्मत के साथ, तो फिर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर आप प्रैक्टिस करते हैं? अगर करते हैं तो किस जगह पे कर रहे हैं प्लीज? ये क्वेश्चन आप किससे पूछ रहे हैं सर? सॉरी फॉर आपसे पूछ रहे हैं। इंटरप्शन सर। डॉक्टर अब्दुल मालिक, आपका माइक ऑफ है। ओके, सॉरी जी, प्लीज। सर आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो लोकेशन बता दें सर काइंडली। सर मैं प्रैक्टिस बस जो स्पेसिफिक लोग हैं, क्योंकि मेरा तो है टीचिंग प्रोफेशन, जिसमें मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। और सम बट कोई अगर हमारे स्पेशल कोई गेस्ट्स आ जाते हैं तो फिर उनके लिए हम मेडिसिन जो है वो देते हैं। अदरवाइज जो है वो ज़्यादा नहीं करते प्रैक्टिस स्पेशली। सर मैं इसलिए सर कह रहा हूँ कि 27 को मेरी शादी है, तो मैं इसलिए कोई चले कुछ प्लान, डाइट प्लान या समथिंग क्या? शादी के लिए तो आप अचानक कैसे? मोटापा तो नहीं है? आप BMI कितना है आपका? सर अल्हम्दुलिल्लाह BMI मेरी 24.45 है। 24 आई थिंक 25 के राउंड अबाउट है। वेट ये तो 70 नॉर्मल kg है, है। और इसमें टेंशन क्यों ले रहे हैं? नहीं नथिंग सर, टेंशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो है ना ओवर वेट ना हो जाऊँ। अभी वो गांव में है तो आपको पता है कि हमारे गांव में जो डाइट प्लान है वो कैसी है, यू नो बेटर, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आपको पता है कि हेल्दी डाइट क्या है, जो खाने में चीजें हैं आप अच्छी इस्तेमाल करें तो उसको अगर यूटिलाइज करेंगे, अगर खाने को, चीज़ों को, जैसे हेल्दी डाइट्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन चीज़ों को, वाटर इनटेक ज़्यादा करें, टेंशन कम से कम ले। ये बेसिकली डिप्रेशन होता है, जब शादी के करीब बंदा होता है ना, उसमें डिप्रेशन ज़्यादा होता है। तो उसको जी राइट। कुव्वत को आपने बढ़ाना है, इंकरेज करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, और फिर जो है टेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर मजीद इशू हो तो बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, आप डायरेक्टली उनको फ़ोन करके भी आप कांटेक्ट करके अपने बारे में पूछ सकते हैं, जो सजेशन दे सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल समीर साहब हैं यहाँ पे, और भी डॉक्टर मौजूद हैं बहुत सारे, तो ऑटोमेटिकली वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग जो आपसे रिलेटेड होगी, इंशाल्लाह बताएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम वेलकम, ऑलवेज वेलकम। डॉक्टर हसीब साहब भी मेरे साथ हैं जी। सर आपने का लेक्चर बड़ा इंफॉर्मेटिव था और बहुत से क्वेश्चन भी अराइज हुए और आपने अच्छे जवाब दिए। तो टाइम भी काफ़ी हो गया, तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। स्पेशल जी थैंक्स सर, टू डॉक्टर थैंक यू। अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ये सब करने के लिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको कंटिन्यू रखिएगा इंशाल्लाह। बहुत इन्फॉर्मेटिव है। थैंक यू। लोग आते रहेंगे, पार्टिसिपेट करते रहेंगे, चलता रहेगा। डॉक्टर इसबा अपना यूज कर। Okay, thank you so much, our respected guest speaker, Dr. Abdul Malik, for joining us, for your precious time you have given us. Your overall lecture about management of obesity was very precious, beneficial, and informative for all participants. Thanks again, Dr. Muhammad Akram, for organizing this webinar. Thanks a lot for joining us, all participants. Allah Hafiz. जज़ाकल्लाह।